तो लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 3, the negative initially the marginal cost curve is falling. Initially the marginal cost curve is falling. Full stop. It corresponds to that part of the total cost curve आपका साउंड नहीं आ रहा है सर। हेलो, आज लगता है नेटवर्क का इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। लिखिएगा, it corresponds to that part of total cost curve. It corresponds to that part of total cost curve where the TC is rising, but at a diminishing rate. Full stop. Next point. The minimum point of marginal cost curve. The minimum point of marginal cost curve comma, corresponds to that point, corresponds corresponds to that point on TC curve, up to which TC is rising at a diminishing rate. TC is rising at a diminishing rate. Full stop.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, the marginal cost curve, the marginal cost curve is rising from its minimum. Repeat, sir. Rising minimum is rising from its minimum. अपने मिनिमम से ऊपर की ओर राइज कर रहा है. राइजिंग फ्रॉम इट्स मिनिमम. And has a positive slope. And has a positive slope. Full stop. It corresponds to that part. It corresponds to that part of the TC curve. It corresponds to that part of the TC curve where TC is rising, but TC is rising, but at an increasing rate. Is rising, but Sir, at an increasing rate. आवाज अच्छा से नहीं आ रही है सर. सर आवाज साफ नहीं आ रही है. अच्छा, ये सारे बच्चों के साथ हो रहा है क्या? नो सर. No, sir. No, sir. नो सर. यस No, सर. sir. इधर भी आवाज नहीं आ रहा है सही से सर. तो थोड़ा आ कट कट के आता है. यस सर. हाँ, वो तुम्हारे वो नेटवर्क का इशू होगा. Yes, तुम्हारा. sir. लिखो, the marginal corresponds to that part of the TC curve where TC is rising at an increasing rate. Full stop. Yes, sir. नीचे लिखिएगा लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके स्टार मार्क देके. In short, the marginal cost curve shows Repeat. the total cost is changing. ये स्टार मार्क में पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट देके लिखिएगा. दूसरा पॉइंट. आवाज नहीं आ रहा था आपका. सर रिपीट कीजिएगा. सर एक बार रिपीट. सर डिस्कनेक्ट.
हेलो यस हेलो। सर। सर पहला पॉइंट रिपीट कीजिएगा। पहला पॉइंट था कि द मार्जिनल कॉस्ट कर्व शोज the rate by which total cost changes. The rate by which the total cost changes. Point number 2. Mark देखें point number 2. The behavior of total cost and marginal cost. The behavior of total cost and marginal cost is Repeat, sir. Repeat, sir. the behavior of total cost and marginal cost is the behavior of total cost and marginal cost is the function of the law of variable proportion is the function of the law of variable proportion. अब अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पहले क्या होता था, इंक्रीजिंग रिटर्न काम करता था, यानी कि सब कुछ बढ़ता था लेकिन किस रेट से बढ़ता था, इंक्रीजिंग रेट से। यस सर। दूसरा क्या था, डिमिनिशिंग, घटते हुए क्रम से बढ़ता था लेकिन Yes. घटते हुए क्रम से बढ़ता था। और फाइनली तीसरा कि बढ़ता ही नहीं था, अब नेगेटिव होने लगता था। क्या होने लगता था, नेगेटिव। तो ये Negative लॉ होने ऑफ लगता है। ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब आप देखिए कि जो प्रोडक्शन में होगा उसका ठीक उल्टा कॉस्ट के साथ होगा, कॉस्ट। अब कॉमन सेंस लगाइए, अगर मेरा प्रोडक्शन शुरुआती दौर में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो मेरा कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन किस रेट से बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट से। अब अगर ये डिमिनिशिंग और नेगेटिव हो रहा है, अब यानी कि मेरा कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन किस रेट से बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। इंक्रीजिंग रेट से। तो यही है, प्रोडक्शन का ठीक अपोजिट होता है कॉस्ट में। प्रोडक्शन के केस में हमारा सब कुछ पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिमिनिशिंग रेट से, और फाइनली वो नेगेटिव रेट से बढ़ता है। तो इसी का सीधा ठीक उल्टा होता है कॉस्ट में, क्योंकि जब मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो मेरा कॉस्ट कम होगा, जब मुझे प्रोडक्शन कम मिलेगा तो मेरा कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो कॉस्ट आपका डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, फिर जब आपका प्रोडक्शन डिमिनिशिंग और नेगेटिव रेट से बढ़ता है तो आपका कॉस्ट जो होगा वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब इसमें एक टॉपिक और रह गया है जो कि है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो उसको हम लोग कल, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो उसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को दो टॉपिक को कवर करना है। जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये करना है जिसको हम लोग शॉर्ट में LAC कहते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और दूसरा जो हम लोगों को करना है वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को समझना है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है, यानी कि उत्पादक
कुशलता क्या होती है? कब हम कहेंगे कि कोई भी फर्म प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में ऑपरेट कर रहा है? इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.